Assalamu alaikum children, once again we are starting part number 2 of the chapter number 4, that is visit. We are in session number 7. I am Shazia Rana, your vice principal and your English teacher. Today is 14 July and the time is 9:36 and we are starting part number 2. So let's see the PowerPoint presentation for the same. Okay children. Okay, prior starting part number 2, let me know about the explanation of each and every machinery which I have given you. Do you understand each and every point about the machinery? Yes, unmute your mics and answer me. I have guided you about the bluffing, seeding, harvesting, and combine. Do you understand each and everything? Answer me, please. Yes, ma'am. Okay. Samira, what do bluffing do? मैम प्लफिंग डूइंग वो सरफेस को बिल्कुल नरम कर देती है और मिट्टी को बिल्कुल नरम कर देती है, इससे हमें सीड डालने में इजी होता है. Very good. Ploughing is actually a procedure to make the soil more tender and to make it prepare for seeding. Okay, Hashim, what is a seeding procedure? Seeding is a process in which, through a machinery, a seeds has been tried to absorb in the soil, so it will be ready for the plantation. Okay. Okay, let's go through the exercise now. I'm muting your mics and I'll be explaining you the exercise. The exercise consists on a few MCQs and a small part of grammar. So let's find out the sentences. The 5 sentences are there, that is planning, model, irrigate, plentiful, and harmful. While having the sentences over here, you must have know the meaning of the words. Planning means to plan something. किसी चीज को plan करना. Planning is not only a planning to write, it can be planned to visit, it can be planned to eat, it can be planned to design, it can be planned to spend this vacations, etc. So if planning is relevant to so many areas, that means you are having a enough portion to make more sentences. It is not limited, it is unlimited. So planning, I'm planning to take computer classes in the summer vacations. मैं कंप्यूटर क्लासेस लेने का प्लान कर रहा हूँ समर वेकेशंस में. इट कैन बी विद सो मच वेरिएशन. नाउ चेंज द सेंटेंस. I am planning to take computer classes in the winter vacation. I am planning to take computer classes in the spring break. I am planning to take mathematics classes on the weekends. ठीक है, इसमें बहुत सारी वेरिएशन डाल के आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस इसमें ऐड कर सकते हैं. I am planning to is the open part, and furthermore you can add up your plan to make the complete sentence, right? Model. The engineer presented a new model of car in the seminar. Fine. Engineer presented a new model of the car in the seminar. Okay. Vice principal presented a new presentation in class 10th. ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, that can be also a sentence. Irrigate. What is the meaning of irrigate? Irritation नहीं है. Irrigate. Irrigation is the procedure where farmers has dug the canals to irrigate the lands. क्या करते हैं, जमीन के अंदर different pipes बिछाए जाते हैं, pipes का जाल बिछाया जाता है, या canals रास्ते बनाए जाते हैं, canals बनाए जाते हैं, जो कि पानी गुजरने की जगह होती है. अब इतना बड़ा फार्म है, उसमें ऐसे ही पानी तो नहीं छोड़ देंगे ना. देयर मस्ट बी सम पैसेज एंड कैनाल्स थ्रू व्हिच द वाटर विल बी flowing. Those canals, those net of canals
and pipes are known as, that pattern is known as irrigation. इसको irrigation कहते हैं. और मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेस है, वो उस वक्त के लिहाज से बेस्ट इरिगेशन वहां पर हुई हुई थी. जब हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है तो हमें ये चीज पता चली कि मोहनजोदारो में उस वक्त की बेस्ट इरिगेशन हुई हुई थी. पानी गुजरने के बहुत अच्छे रास्ते उन्होंने बनाए. द फार्मर हैज डग द कैनाल्स टू इरिगेट हिज लैंड. किसान ने अपनी जमीन में बहुत सारे रास्ते बनाए थे पानी गुजारने के लिए. प्लेंटीफुल होता है बहुत ज्यादा. आई हैव गॉट प्लेंटीफुल अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन यू. मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए. ओके फाइन. सो कैन वी चेंज इट विद मनी विद टाइम. आई हैव गॉट प्लेंटीफुल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन यू. मेरे पास बहुत वक्त है तुम पे खर्च करने के लिए. राइट. आई हैव गॉट प्लेंटीफुल clothes to share with you. मेरे पास बहुत से कपड़े हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ. I have got plentiful dresses to gift. मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो मैं गिफ्ट कर सकती हूँ. ठीक है. इस तरह से I have plentiful crockery to design. I have plentiful pots to paint. ठीक है. इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है. Harmful is a very general word. Pollution is a very harmful disease for this world. पोल्यूशन इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा तबाहकुन बीमारी है. कैंसर इज अ हार्मफुल डिजीज. कैंसर इज अ डेडली डिजीज. इस तरह करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. एंड योर होम टास्क इज यू आर सपोज टू मेक 2 sentences फॉर ईच वर्ड एंड एवरी सेंटेंस शुड बी इन अ डिफरेंट मूड. आई होप आई एम क्लियर. now come towards the fill in the blanks. I'm giving you 1 minute. Just check out the fill in the blanks and tell me that I have filled the blanks. Is it correct or not? I'm giving you 1 minute. Just see it and check it. And if you're having any question, you can ask. Yes, the time is finished. Have you gone through the topic? Have you gone through the blanks? Okay, let me read them. The headmaster had allowed them a day's outing. Headmaster ने उनको एक दिन बाहर गुजारने के लिए allow किया, जो बच्चे विजिट करने के लिए गए थे. Mr. Haroon received them at the gate. Mr. Haroon ने उन्हें गेट पर रिसीव किया and showed them around, और उन्हें सारी जगह दिखाई. With one sweep, it seemed to eat up a large area. एक नजर देखने में वो जगह बहुत बड़ी नजर आती थी. With one sweep, एक नजर देखना. The pupils watched the working of the machine with keen interest. Students machines की working बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देख रहे थे. Keen interest, extreme interest जो होता है, गहरी दिलचस्पी. No, certainly not. नहीं, ये यकीनी तौर पर नहीं हो सकता. The sowing machine sows the seeds well. जो मशीन थी वो बहुत अच्छे से बीज डाल रही थी. No seed goes waste. कोई भी बीज वेस्ट नहीं हो रहा था. We use chemical fertilizers to enrich the soil. हम chemical fertilizers यूज करते हैं किस काम के लिए? जमीन को जरखेज बनाने के लिए, more fertile करने के लिए, to enrich, उसको मजीद ताकतवर बनाने के लिए. The visitors were surprised to see growing there such vegetables as were out of season. जो visitors थे वो ये देखकर हैरान रह गए
कि वहां पर वो वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रही थी जो कि आउट ऑफ सीजन थी. ओके. He offered the boys fresh tomatoes and cucumbers. Mr. Harun ने उनको fresh tomatoes और cucumbers, खीरे और टमाटर खाने की पेशकश की. I hope it all clear that the blanks which are filled are actually right. So you can write it down in your copies and you can type it in the MS Word document also. Now come towards the next. Now come to the grammar portion. Use adjectives in your sentences. They are not asking only the sentences, they are saying that they use adjectives in your sentences. What are adjectives? Adjectives is the word which shows the good and bad of any of the thing. Adjective एक ऐसा अल्फाज होता है जो किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करता है. Adjective is the word which shows the good and bad of any of the thing. किसी चीज की अच्छाई और बुराई जो word express करता है, that is adjective. Pleasant can be a pleasant smell, pleasant environment, and can be anything. So let's find out the sentence. This perfume gives a very pleasant smell. ये perfume मुझे बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है. So the adjective definitely pleasant must be relevant to environment, relevant to perfume, relevant to blossoming, relevant to flowers, relevant to personality, etc. Fine. Interesting. Interesting means anything which is interesting. Any subject might be interesting. Any topic might be interesting. So physics is an interesting subject. तो interesting के साथ क्या चीज अटैच हो गई? उस सब्जेक्ट का नाम अटैच हो गया. Huge. Sun is very huge as compared to our earth. सूरज जो है वो हमारी जमीन से कहीं बड़ा है. Vast. Arrangements have been made on vast scale for the prevention of crimes in the country. Vast का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत huge, huge से भी बड़ा. Large. This exercise is very large. This chapter is very large. This session is very large. Right? I hope it's clear. Now come towards the speech. That is indirect speech and you are supposed to convert it into the direct speech. ये आपकी indirect speech है और इसको direct में convert करना है. Direct and indirect speech होता क्या है? What is it actually? Direct and indirect speech is actually relevant to something which needs to be expressed according to the situation. Sometimes हम directly किसी से बात कर रहे होते हैं कि मैंने आपसे ये कहा, I speak to you like this. मैंने आपसे कुछ बात की और मैंने आपको कुछ चीजें explain की. But sometimes मैं या आप वहां नहीं होते हैं and someone else is explaining the story on behalf of us. If somebody else is explaining the story on behalf of us, that is indirect speech. When the direct speaker is not there, that is indirect. But if the person is directly saying something, that means that is a direct speech. Up, the thing is that we are talking about the words and these are the paragraphs. And if these are the paragraphs, how do we know that the person is standing over there or not? Or the person is standing and someone else is explaining the story. So the words can explain then how it converts into indirect and how it converts into direct. Let me read the passage. Mr. Hassan told the visitors that the farm had been doing so well. Had been. Mr. Hassan told the Mr. Hassan ने visitors को बताया that farm had been doing so well that they had decided to add a dairy to there. उन्होंने कहा कि वहां पे वो डेयरी प्रोडक्ट्स का काम भी शुरू करेंगे. Finest cows and buffaloes would be kept. The farm would use an electric milker to milk the animals. Modern machinery would make cream and butter. उन्होंने ये बताया कि वहां पर डेयरी का काम शुरू करने वाले हैं. बहुत अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें वहां पर रखी जाएंगी और फॉर्म में एक इलेक्ट्रिक मिल्कर होगा जो कि which will use to milk the animals and modern machinery would make cream and butter. वो जो मिल्क उससे गेन किया जाएगा एक मॉडर्न मशीनरी के थ्रू उनको क्रीम एंड बटर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा. Mr. Hassan told the visitors.
मैं किसी और को बता रही हूँ कि मिस्टर हसन ने विजिटर्स से ये बात की, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। नाउ चेक आउट द डायरेक्ट स्पीच। मिस्टर हसन सेड टू द विजिटर्स, मिस्टर हसन ने विजिटर्स से कहा, बताया नहीं। ही सेड टू द विजिटर्स द फॉर्म हैज बीन डूइंग सो वेल। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 3-4 वर्ड्स का फर्क है। ये फॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। दैट वी हैव डिसाइडेड टू ऐड अ डेयरी। वी हैव प्रीवियसली क्या था, दे हैड, अब कह रहे हैं वी हैव। दे हैड वो करेंगे, वो कर रहे थे। वी हैव हम कर रहे हैं। डिसाइडेड टू ऐड अ डेयरी, हमने डिसाइड किया कि हम डेयरी इसमें ऐड करेंगे, दूध का काम ऐड करेंगे। द फाइनेस्ट काउज एंड बफेलोज विल बी केप्ट, अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें रखी जाएंगी। द फॉर्म विल यूज एन इलेक्ट्रिक मिल्कर टू मिल्क द एनिमल्स। मॉडर्न मशीनरी विल मेक क्रीम एंड बटर। Direct and indirect speech, you can have the difference. Indirect speech is actually if someone else is telling the story, and direct speech is something whenever a person is directly saying something. Okay, now come towards the idioms. Idioms we are having only two, that is get rid of and get at. Get rid of, I get rid of किसी चीज से जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाना, बहुत just leave it, कि मतलब don't come to me. I got rid of problem by my father. मैं अपने मुश्किलात से बाहर निकल आया अपनी फादर की हेल्प से. I get rid of, I want to get rid of this pandemic. I want to get rid of this corona. Fine, मैं इससे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ. मीन्स कोई चीज है जो something is like after you, उससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं. That is the word for that in English is get rid of. It's an idiom. I get rid of problems by my father. I want to get rid of this corona. I want to get rid of sitting home. I want to get rid of this pandemic. Fine. Get at, आसानी से किसी चीज को समझ लेना, that is known as get at. He get at the point after listening the mystery. वो सारी बात सुनने के बाद point को अच्छी तरीके से समझ गया. I get at the time. मैं सही वक्त पे पहुंच गई. I get the logic at you. मैं तुम्हारी बात, तुम्हारा नजरिया समझ गई. ठीक है. Okay, now this is the end of part number 2, and the home task is that you are supposed to learn the exercise and get ready for the surprise quiz. Surprise quiz can be taken anytime after today. आज के बाद किसी भी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट लिया जा सकता है. It can be any day, either संडे भी हो सकता है. किसी भी दिन मैं आपको मैसेज कर दूंगी और कहूंगी कि 1 घंटे के बाद क्विज के लिए आ जाइए. So you will be having only 1 hour to make yourself prepared if you're not prepared previously. But today you are supposed to go through the chapter, go through the exercise, find out all the explanations, and learn each and everything, understand each and everything. And I will be taking the surprise quiz of 15 minutes. And it will be online. It will not be the written one. It will be online. Okay. I hope it's all clear. Thank you very much. I'm closing the PPT and now come towards the question and answer session. Yes, children. Do you understand the grammar portion? Yes, ma'am. Okay, Samira. Hashim, do you understand the sentences? Yes, ma'am. Okay. Hashim, what is the meaning of get rid of? Yes, get rid of. Hashim, I cannot hear you. Get rid of means if something is after you and you want to just want that thing to leave you. कोई ऐसी चीज जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं. That is known as get rid of. Samira, what is the meaning of get at? Get at. Get at means कि किसी भी चीज मतलब कि अपनी
किसी भी चीज के अंदर जाना, गेट एट। किसी चीज को समझ जाना, किसी चीज का पॉइंट समझ जाना, दैट इज नोन एज आई गेट इट। आई गेट एट द पॉइंट, मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है, ठीक है समीरा। यस मैम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? व्हाट इज इरिगेट? इरिगेशन मैम के जमीन के नीचे किसी भी तरह के पानी के पाइप लगाना जिससे कि हमारे फसल्स को पानी मिल सके। जी जी बिल्कुल। A pattern of making canals for water flow is known as irrigation. And which historical place is having the best irrigation system of its time? मोइंजोदाड़ो। Very good. I hope everything is clear. The way that you are answering me, Samira, that means that you have understood each and everything. I want to know others also. If you're not having any problem, then fine. But if you're facing any difficulty, you can message me anytime and ask me the question relevant to the topic. So I'm closing the session. Thank you very much. Be prepared for the quiz. It will be taking after today at any day. किसी भी दिन मैं आपको मैसेज कर दूंगी that get ready for the quiz and you are supposed to come online and answer me on the quiz. Okay, relevant to this chapter. This is a tough chapter, a quite a lengthy one. You are supposed to go through it again and again. Okay, I'm closing the session. See you next week, inshallah. Take care and Allah Hafiz.